अस्सलाम वालेकुम क्लास, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट लास्ट टाइम। सो मार्केटिंग रिसर्च की हम पूरी कैंपेन को देख रहे थे कि किस तरह होती है और किस तरह मार्केटिंग रिसर्च करते हैं। नाउ डाटा कलेक्शन, हम डाटा कलेक्शन को देखने जा रहे हैं कि आज डाटा कलेक्शन किस तरह से की जाती है, क्योंकि हम नहीं देख रहे थे कि हम मार्केटिंग रिसर्च का अपना डिज़ाइन कैसे बनाएंगे, उसकी सैम्पलिंग टेक्निक्स और सारा कुछ किस तरह क्वेश्चन कैसे डिज़ाइन करेंगे। नाउ एक्चुअल डाटा कलेक्शन किस तरह की जाएगी, ठीक है। The data collection process is very important. You see, it's very crucial since it involves a large population of research बजट के, जिसके अंदर आप पूरा अपना बजट यूज कर रहे थे एक्चुअली इस प्रोसेस के ऊपर। सो इसके अंदर अगर एरर आ जाता है तो वो रिजल्ट्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर देगा आपको, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन इज क्रिटिकल सिंस इट इन्वॉल्व्स द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द रिसर्च बजट और प्रोपोर्शन ऑफ द रिसर्च बजट एंड लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल एरर इन द रिसर्च रिजल्ट्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ अगर आप गलती कर देते तो टोटल एरर भी आपका मैक्सिमम होगा। डेटा कलेक्शन रिक्वायर्स अ फील्ड फोर्स ऑफ सम टाइप, लाइक, ठीक है ना, आपको लोगों को भेजना पड़ेगा डाटा कलेक्शन करने के लिए। दिस फील्ड स्टाफ ऑपरेट इन द फील्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यूइंग, जैसे कि आप इन होम या मॉल इंटरसेप्ट के थ्रू या कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूज कर सकते हैं, या टेलीफोनिक इंटरव्यूज कर सकते हैं, या मेल क्वेश्चनर और इलेक्ट्रॉनिक ईमेल के थ्रू आप क्वेश्चन को फिल करवा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये वो फील्ड स्टाफ होता है जो जाके डाटा कलेक्ट कर रहा होता है, या ईमेल के थ्रू लोगों को ईमेल भेज के उनसे रिस्पांस ले रहा है, इंटरनेट के थ्रू, फोन के थ्रू, ठीक है। सो प्रॉपर सिलेक्शन, ट्रेनिंग, उनकी सुपरविजन, उनकी वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है फील्ड फोर्स की, ताकि एरर का जो चांस है वो मिनिमाइज किया जा सके डाटा कलेक्शन के दरमियान, ठीक है। अब डाटा जब कलेक्ट हो गया तो उसके बाद उसका एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उसको एनालाइज करेंगे तो ही हमें पता चलेगा इसका मतलब क्या है। जस्ट कलेक्टेड डाटा मींस नथिंग, इट इज जस्ट सम टाइप ऑफ डाटा। डाटा गिव्स यू नो इन्फॉर्मेशन, तो उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए, उससे कोई हासिल लेने के, उसको रिजल्ट लेने के लिए जिसको आप यूज कर सकें, यू हैव टू एनालाइज दैट डाटा। After data has been collected by the field force, the data are to be analyzed, you see, and it has two steps: data preparation and processing and data analysis. सबसे पहली चीज हम करते हैं वो डाटा प्रिपरेशन और प्रोसेसिंग है, क्योंकि डाटा डायरेक्टली रेडी नहीं होता एनालिसिस के लिए। समटाइम्स देयर आर आउटलायर्स, समटाइम्स देयर थिंग्स जो कि आपको निकालनी होंगी, कुछ रिस्पॉन्स डाटा सही से नहीं दिया, यू नो दैट, तो उनको निकालना जरूरी है, या कुछ चीज़ों को सेट करना जरूरी है, या उनकी कोडिंग करना जरूरी है बिफोर एनालिसिस, ठीक है। एंड देन लेटर ऑन यू डू द डाटा एनालिसिस। जो डाटा प्रिपेयर किया जाता है पहले उसकी एडिटिंग की जाती है, उसकी कोडिंग की जाती है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन और वेरिफिकेशन की जाती है, ठीक है। So data preparation includes editing, coding, transcription, and verification. Each questionnaire or form is inspected or edited, and if necessary, corrected. Numbers or codes are assigned to represent each response to each question in the data collected instrument. For example, male is 1 and female is 2. वहाँ पर तो उन्होंने मेल फीमेल रखे हैं, हमने अब इसकी कोडिंग करनी है 1 और 2 के अंदर, ठीक है। इसी तरह से अब हमने मिसिंग डेटा फिल करना है, कि जहाँ पर मिसिंग डेटा है उसको हम आइदर रिप्लेस कर देंगे मीन के साथ या उसको डिलीट करेंगे, तो वो भी हमें करना है। The data from the questionnaire is input directly into the computer. In the second stage, data are analyzed by the way of tabulation, cross tabulation, or statistical tests. Tabulation refers to counting of the number of responses or observations that fill in each category of responses, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, कितने लोगों ने क्या रिस्पांस दिया, कितने लोगों ने क्या रिस्पांस दिया, बेसिक वो टेबुलेशन की जा सकती है। लेकिन यूजुअली ये सिर्फ टेबुलेशन में हम नहीं रुकते, हम इसके स्टैटिस्टिकल टेस्ट भी लगाते हैं। अगर हमारा डाटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा सिग्निफिकेंट या हाइपोथेसिस टेस्ट करने हैं, तो हम वहां पर स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगा देंगे। अगर टेबुलेशन से काम चल रहा है तो फाइन, otherwise we'll go to statistical tests. It allows the researcher to understand what collected data means. Examining two or more response categories at the same time is called cross tabulation. Finally, a variety of statistical tests, including mean, frequency, correlation, for example, trend analysis, test of significance, factor analysis, regression, like chi-square, these tests are performed. Also used to analyze the data, and data analysis leads to draw conclusions and answer the specific research questions. अब डाटा हमने प्रिपेयर भी कर लिया और एनालाइज भी कर लिया। अब हमें इसकी एक रिपोर्ट बनानी है जो हम प्रेजेंट कर सकें अपने क्लाइंट को या अपनी कंपनी को, जिसकी बेसिस के ऊपर हम डिसीजन कर सकें। बिकॉज हम अब ये डाटा ऐसे ही रखते हैं तो इट मेक्स लिटिल सेंस। एक्सपर्ट के लिए समझना जरूरी है ना कि किस तरह से ये डाटा का क्या मतलब है, तो इसकी हम एक रिपोर्ट बनाते हैं ताकि एक आम बंदा भी उसे आसानी से समझ सके। तो लास्ट स्टेप होता है रिपोर्ट प्रिपेयर करना।
in most important place of marketing research. Importance इसकी है कि research report properly communicates the study results to the client. Entire project document is a research report, details are here. ठीक है. Tables, graphs to enhance clarity and impact, neatly produce analysis according to the objective, SPSS or other invariable oral presentation before finalization. ठीक है. Major findings, conclusions हैं, improvements, additional work, report finalization के अंदर कुछ चीज़ चाहिए. Research report should be clear, concise, complete, standard format जो है आपका वो follow होना चाहिए. Level of audience जो है उसके according उसकी language set होनी चाहिए. ठीक है. अब जरा एक बार देखने के उस रिपोर्ट बनाने के अलावा इसके अंदर जो मार्केटिंग रिसर्च की टाइप्स हैं वो क्या होती है. डिफरेंट टाइप्स की रिसर्च होती है. ठीक है ना. तो बेसिकली इन टाइप्स को डिफाइन कर लेना सब जरूरी है. दो टाइप्स हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, जो मेजर है. ठीक है. टू बेसिक टाइप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च. एक है बेसिक रिसर्च, दूसरी है अप्लाइड रिसर्च. बेसिक का मतलब है कि आप नॉलेज के लिए और सिर्फ चीजों के बारे में और अंडरस्टैंडिंग जनरेट करने के लिए इस रिसर्च को कर रहे हैं. ठीक है. और जो अप्लाइड रिसर्च है इसका मतलब है कि आपने इसको इस्तेमाल करना है एक्चुअली कहीं पर कोई डिसीजन करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज लाने के लिए. सो बेसिक रिसर्च इज फॉर नॉलेज वैल्यूएबल एंड लेसर. ऑल साइंटिस्ट लोग इसको करते रहते हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो अप्लाइड रिसर्च होगी. So it is undertaken to solve a specific research problem and mostly applied. Other types are action, correlational, etc. तो इसमें बहुत सारी और टाइप्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. Now defining a problem, definition is critical. ठीक है. It gives definition to subsequent phase of marketing research. Standardized research and syndicated some process day in and day out in detail order. ठीक है. It is done by marketing research suppliers. Research may be customized where a unique marketing management problem is confronting the manager. Researchers should understand the unique situation for customized problem, conduct discussion with manager. Problem definition is in the form of statement of the general problem and identification of the specific components of marketing research problem. Difference between a manager and researcher इसको भी हम define कर लें, that would be better, क्योंकि manager जो है वो line decisions कर रहा होता है, वो basically profit or loss और इस तरह के काम कर रहा है, जबकि researcher जो है वो एक staff होगा, वो information generate कर रहा होगा, questions पूछ रहा होगा, scholarly काम कर रहा होगा. both work in different worlds. Manager जो है वो line के अंदर काम करता है, decision making में making profit, wants answer to questions, emotional, political, wants the system symptoms to disappear, practical, pragmatic होता है वो. ठीक है. जबकि researcher जो होता है वो staff होगा, generate कर रहा होगा information को, wants to ask questions, scholarly, detached, unemotional, non-political होगा ये. अब ये he wants to find the truth. That's it. His job is to find the truth. As marketing manager and marketing researcher have different orientations, they develop differences. Both should understand each other's role. Discussions support each other. Okay. Both should view marketing research as a partnership endeavor. ठीक है. क्योंकि दोनों के objectives different है, दोनों मिलकर काम नहीं कर सकते, दोनों का कहीं ना कहीं conflict raise हो जाता है. Researcher fruit ढूंढना चाह रहा है, लेकिन जो marketer वो अपनी profitability भी देना चाहता है, वो कम से कम spend करना चाहता है. दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. अगर दोनों कम्युनिकेट करें तो दोनों एक अच्छे डिसीजन पे पहुंच सकते हैं और सही से काम कर सकते हैं एक साथ. They can have meaningful discussions to clarify the things. For example, whether to investigate changes in the marketplace or select alternative marketing action or help gain some competitive advantage or stay abreast of marketing trends. Marketing research problem differs from marketing management problem. Okay. अब ये मार्केटिंग रिसर्च की प्रॉब्लम क्या और मार्केटिंग और मैनेजमेंट प्रॉब्लम क्या है, इसको भी जरा हम डिफाइन कर लें. Management problem, it is a decision making situation confronting the marketing manager, emerging from problems, low performance of the product, opportunities, new trends or symptoms, market share declining. जबकि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, मार्केटिंग रिसर्च इज डिफाइंड एज providing relevant, accurate, unbiased information that managers can use to solve their marketing management problem. Research problem is defined on the basis of management problem. It is critical that management problem be defined accurately and fully. Now the example of relationship between decision and research problem. Okay. Decision problem क्या है, research problem क्या. Decision problem के अंदर we develop packaging for a new product.
जबकि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होगी, इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द अल्टरनेटिव पैकेजिंग डिसीजन, कि अगर इसकी जगह दूसरा डिसीजन किया जाता तो उसकी क्या इफेक्टिवनेस होगी, ठीक है। इस तरह से डिसीजन प्रॉब्लम है कि इंक्रीज मार्केट पेनिट्रेशन थ्रू द ओपनिंग ऑफ न्यू स्टोर्स, जबकि इसका रिसर्च प्रॉब्लम क्या होगा, इवैल्यूएट द पर्सपेक्टिव लोकेशन कि कहां पर स्टोर खोला जा सकता है। देन डिसीजन प्रॉब्लम है कि जी इंक्रीज स्टोर ट्रैफिक, स्टोर की ट्रैफिक को इंक्रीज किया जाए, जबकि इसकी रिसर्च प्रॉब्लम होगी कि मेजर करंट इमेज ऑफ द स्टोर। इस तरह डिसीजन प्रॉब्लम है allocate advertising budget geographically और introduce new product। और रिसर्च प्रॉब्लम्स की होगी कि determine the current level of marketing penetration in this respective area and design test market and do market testing to check the acceptance of the new product। Now the construction constructs and the operational definitions. To formulate the research problem, the market researcher has to specify constructs and operational definitions and identify the relationship between various constructs. A construct is a term for concept that is somewhat involved in the marketing management problem that will be researched. Examples of marketing constructs may be brand awareness, recall, attitude towards brand, lifestyle, and brand loyalty, etc. Although general perception of these constructs may be shared by the managers and researchers, yet marketing research translates the construct into an operational definition which describes how a construct will be measured. It ultimately helps in formulating the question that will be asked to get information about the construct. For example, कंस्ट्रक्ट क्या होगा, ब्रांड अवेयरनेस। अब इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ रिस्पोंडेंट्स हैविंग हर्ड ऑफ द ब्रांड, ये इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन है, ठीक है। इस तरह से कंस्ट्रक्ट हो सकता है रिकॉल ऑफ एड, ठीक है। इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन अब ये है कि नंबर ऑफ पीपल हु रिमेंबर सीइंग एन एड। इस तरह से कंस्ट्रक्ट है नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन होगी व्हाट दे कैन टेल अबाउट द प्रोडक्ट। इस तरह से कंस्ट्रक्ट है एटीट्यूड टुवर्ड्स द ब्रांड, इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन होगी नंबर दैट फील पॉजिटिव और नेगेटिव अबाउट द ब्रांड। इस तरह से कंस्ट्रक्ट हो सकता है सेटिस्फेक्शन आपने मेजर करनी है, उसके अंदर आप करेंगे ऑपरेशनल डेफिनेशन के हाउ दे इवैल्यूएट दिस परफॉर्मेंस। इस तरह से ब्रांड लॉयल्टी है आपका कंसेप्ट, तो इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन होगी हाउ मेनी टाइम्स दे बॉट द ब्रांड इन द लास्ट 6 मंथ्स। अब रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करने की प्रोसेस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा गौर से सुन लें। The process of defining the research problem, the task involved in the defining of the research problem are explained below, okay। So discussion with the manager, सबसे पहले आप मैनेजर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आपको उससे जो चीज समझ आई उसकी बेसिस के ऊपर आप इंटरव्यू करेंगे विद द एक्सपर्ट्स, सेकेंडरी डेटा का एनालिसिस करेंगे और प्रिलिमिनरी रिसर्च करके आप बेसिकली एनवायरमेंटल कंटेंट जो है ऑफ दैट प्रॉब्लम डेफिनेशन वो प्रिपेयर कर लेंगे। उसका एनवायरमेंट क्या है कि किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, किस एनवायरमेंट के अंदर उसको देखा जा रहा है। फिर प्रॉब्लम को इसकी बेसिस के ऊपर डिफाइन कर लिया जाएगा और मैनेजमेंट डिसीजन की प्रॉब्लम बनाई जाएगी कि मैनेजमेंट डिसीजन की प्रॉब्लम क्या है, मैनेजमेंट जो डिसीजन है उसकी प्रॉब्लम क्या है। फिर मार्केटिंग रिसर्च की प्रॉब्लम उसे डिफाइन की जाएगी कि मार्केटिंग रिसर्च हमने किस प्रॉब्लम पे करनी है, जो मैनेजमेंट डिसीजन ले रहा है उस प्रॉब्लम से क्या मार्केटिंग रिसर्च प्रॉब्लम है। फिर उसका रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस और इंफॉर्मेशन नीड्स जो है वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे। So that's it for today, students. Thank you very much. We'll continue with this course next time.